बड़ी गलती हो सकती है। हेलो गाइस, आज था PMGC सर्वाइवल स्टेज का डे 2 जिसका फाइनल डे कल है। कल बॉटम 8 टीम एलिमिनेट हो जाएगी। पार्टिसिपेटिंग टीम्स ग्रुप रेड आज के दिन खेलता हुआ दिखाई देगा। आप देखें इन्फ्लुएंसर एज को, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में ये चौथे पर है, लेकिन दैट डज नॉट मैटर्स क्योंकि आपने क्वालिफाई ओवरऑल रैंकिंग्स की बुनियाद पर करना है और 16 टीमों ने क्वालिफाई करना है ओवरऑल रैंकिंग्स के को देखते हुए। अभी के लिए जी ग्लैडिएटर्स कल के दिन वो टीमें जिन्होंने स्ट्रगल किया वो अर्ली फाइट्स के अंदर आ रही हैं। जी ग्लैडिएटर्स अब QST से फाइट लेने के लिए आ चुकी है। इनफैक्ट QST के प्लेयर्स, जहां ग्लैडिएटर्स के एक प्लेयर को गिरा दिया जा चुका है, दूसरे प्लेयर भी गिर चुके हैं, आखिरी 2 प्लेयर्स जी ग्लैडिएटर्स के रह चुके हैं। देखते किस तरह से सामना कर पाते हैं। जंप शॉट दिया जाएगा, दोनों तरफ से शॉटगन्स का बोलबाला था और जी ग्लैडिएटर्स के प्लेयर एक और नॉकआउट निकालने में कामयाब। टीम QST का गेम ओवर कर दिया जाता है। एक अच्छा मैच चल रहा है और कोशिशें की जा रही हैं कि अच्छा ही चलता रहे, लेकिन नसर ई स्पोर्ट्स एक जाल से निकलते हैं, दूसरे जाल में फंस जाते हैं। टीम PJ व परसीहा ईवोर्स उनकी तरफ से काफी शानदार तरीके से एक प्लेयर को गिराया गया है और नसर ई स्पोर्ट्स अब डाउन टू 3 मैन स्टैंडिंग हो चुकी है अपना एक प्लेयर गंवाने के बाद। लेकिन नसर ई स्पोर्ट्स के इस पे कोशिश कर रहे हैं नॉकआउट निकालने की, किसी ना किसी तरह से निकाला भी जाएगा। PJF के प्लेयर इंस्टेंट कंफर्म करने की कोशिश में रहेंगे कामयाब, लेकिन अभी के लिए दोनों तरफ पर कैजुअल्टीज डील किए जा रहे हैं। सर्कल भी आ रहा है, नसर ई स्पोर्ट्स के प्लेयर ब्लू के अंदर रहते हुए कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की। प्ले जोन से प्लेयर गिरेंगे नहीं, बल्कि यूडो लाइंस का थर्ड पार्टी हो जाता है और मेलीज ई स्पोर्ट्स वहां पर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ती हुई, लेकिन यूडो लाइंस के प्लेयर वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जगह सर्कल में बनाते हुए पंच जाएंगे, गेट कीप होंगे जेवियर्स के हाथों, लेकिन रिटालिएशन में क्या बेहतरीन रिफ्लेक्स दिखा पाए यूडो लाइंस के प्लेयर। अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। टीम NB स्पोर्ट्स अपने प्लेयर जोन के बाहर नॉक कराएंगे। एक बड़ी गलती हो सकती है। कित्सुने के सामने जाएंगे, कित्सुने पहला प्लेयर गिराएंगे, लेकिन अकाजे बैक साइड से आ जाते हैं। टीम NB स्पोर्ट्स अपना सर्वाइवल पॉसिबल कराना चाहेगी। 2 प्लेयर्स यहां पर जिंदा है, लेकिन सामने से आती हुई यूटिलिटीज का सामना करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक प्लेयर गिराया जाएगा, अकाजे को भी घुटनों पर लाया जाता है एंड विद 1 प्लेयर डाउन टीम GG से लेकर जा पाएगी। 13वां नॉकडाउन निकाला जाता है। व्हाट इज दिस टीम डूइंग? GG यहां पर स्लैम इन देना चाहेगी। उसका इस्तेमाल करते हुए, अच्छे यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सारे एंगल्स को कवर उनको करना है, लेकिन रिजेक्ट टोक्यो के प्लेयर सारा गलती करते हैं, खुमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। एक और प्लेयर गिर जाएंगे, रिजेक्ट टोक्यो डाउन टू 1 मैन स्टैंडिंग हो चुकी है। अगर इस मैच का चिकन डिनर को कंफर्म कर ले, फेस के प्लेयर स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी जगह आगे बनाना चाहते हैं। सर्कल खत्म हो चुका है। जी ग्लैडिएटर्स के प्लेयर मीकू गिर जाते हैं, मीकू को इंस्टेंटली कंफर्म कर दिया जाएगा। मैटिक कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से अपनी जगह बना पाए इस सर्कल में, इस आखिरी फेज में इस गेम के। उम्मीदें तो जरूर है। जी ग्लैडिएटर्स एक और एलिमिनेशन पॉइंट का इजाफा करेंगे। 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर यह टीम जा चुकी है, लेकिन नॉकआउट निकल आता है। जी ग्लैडिएटर्स के प्लेयर को अब संभल कर खेलना है। सामने डैमेज, एक प्लेयर को उनको गिराना ही गिराना है। प्री फायर्स किए जाएंगे दोनों तरफ पर मैटिक की तरफ से, लेकिन क्या अपना चिकन डिनर कंफर्म कर पाएंगे? यह आखिरी प्लेयर रह चुके हैं। जी ग्लैडिएटर्स के मैटिक को हर तरफ से घेरा डालते हुए एलिमिनेट किया जाएगा। टीम फेस के मोहम्मद के बैकपैक में खेल जाएगा। इस मैच का चिकन डिनर फेस क्लैन लेकर जाएगी। 21 पॉइंट्स निकाले जी ग्लैडिएटर्स ने इस गेम में। के गेम नंबर 2 की तरफ मलीजे को भी रिग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि नॉकआउट तक निकलते हैं रिवाइवल देना बड़ा मुश्किल हो सकता है इस एरिया से। लेकिन किल फीड के अंदर क्योंकि प्लेयर्स डैमेज देते हुए DX के ऊपर नजर आएंगे। फेस के विंटोरस जी ग्लैडिएटर्स को बचकर खेलना है। मैड बुल्स के प्लेयर्स को ऑलरेडी अंदाजा जरूर है कि इस सारे एरिया पर ये फाइट अनफोल्ड हो रहा है। ग्रेनेड्स का मुतबादिल इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम जी ग्लैडिएटर्स की तरफ से एक ग्रेनेड फिर से दोबारा से फेंका। स्मोक्स के बादल भी नीचे आ चुके हैं और स्मोक्स में रहते हुए PJF के प्लेयर्स ज्यादा देर तक अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। दूसरे प्लेयर को भी DBS का इस्तेमाल करते हुए गिरा दिया जाएगा शानदार तरीके से टीम जी ग्लैडिएटर्स। और जी हां, बिल्कुल स्टील होते भी है। रिजेक्ट टोक्यो भी स्टील करती है। टीम जी ग्लैडिएटर्स की मेहनत का फल टीम RC लेकर जाती है, लेकिन टीम NB स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ते हैं। फाइट ली जाती है, एक प्रॉपर हेड ऑन कॉलिजन यहां पर भी बन चुकी है। लादे जी हाँ, क्लोज रेंज फाइट यहाँ पर NB स्पोर्ट्स की देखने को मिलेगी। फिस्ट बॉय आगे बढ़ेंगे, डैमेज देने की कोशिश में नाकाम हो जाते हैं और सामने से जेनोक्स उनको नॉक करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जेनोक्स इज ऑन 1 HP और उनका रीलोड भी नहीं होता। यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। अकाजे यहाँ पूरी टीम को रिवाइव कर देंगे, लेकिन QST की क्लोज रेंज फाइट RC के साथ बन जाएगी। लूफा यहाँ शॉटगन लेकर आगे बढ़ेंगे। 12 यहाँ पर अलहाजी को डाउन करेंगे। कांते यहाँ पे चाहते हैं GG की तरफ से यहाँ पर नॉकआउट निकाला जाएगा। QST यहाँ अपने दूसरे इनफैक्ट तीसरे प्लेयर को भी गवा देगी और इसी असना में अब यहाँ आखिरी प्लेयर फहीदान के ऊपर
पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, लेकिन फहीदान को भी इस मैच से बाहर किया जाएगा। लेकिन रिजेक्ट होके ये गलती करने जा रहे हैं, यूटिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहिए और वही कर रहे हैं। ये शानदार जरूर रहेगा। मोंदो पर ग्रेनेड फेंका, बच जाएंगे अभी के लिए। लोन एचपी जरूर किए गए, स्मोक्स के बादलों में अपने आप को ढांपते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एनबी स्पोर्ट्स के प्लेयर अकाजे गिराते हैं। टीम रिजेक्ट टोक्यो मजीद अपना मेन एडवांटेज गंवाती हुई इस फाइट में। ये जीता हुआ मैच हारते हुए टीम रिजेक्ट टोक्यो इस मैच से बाहर कर दी जाएगी टीम एनबी स्पोर्ट्स के हाथों। मीकू अगर वहां पर थोड़ी देर और सरवाइव करते हैं तो मेरे ख्याल से मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स भी निकाल पाएंगे इस पूरे गेम से, लेकिन डीएसई स्पोर्ट्स मिलीजे स्पोर्ट्स सामना करते हुए टीम मैड बुल्स के खिलाड़ियों का मल्टीपल एंगल्स पर नॉकआउट्स निकालने की कोशिश में टीम डीएस और टीम मिलीजे मिलाकर मैड बुल्स के मेन एडवांटेज को गिराने में कामयाब हो चुके हैं। वो है ही, लेकिन जी ग्लैडिएटर्स के नीको पर सबकी नजरें हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। एलिमिनेट हुए 13वें पायदान पर, लेकिन डीएस इनको भी अंडर एस्टिमेट आपको करना नहीं है। अगर आप डीएस के प्लेयर्स को देखें तो वो ज्यादा दूरियां अख्तियार करना चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सर्कल हासिल कर पाए, लेकिन सर्कल तो छोड़िए, अभी के लिए चिकन डिनर हो चुका है मैड बुल्स का। 21 पॉइंट्स हासिल किए गए मैड बुल्स की तरफ से। Know how important this compound is to them over towards this eastern side of the circle. They don't just want to let a team get through for free. MB Esports, on the other hand, decide that, look, we're going to take shots over towards Inko. Becker in the way, gets absolutely crunched, but lives off the back of that. Grazed by the vehicle, but not out yet. Becker continues to take shots and will finish it there and then. Broken leg regardless. Fought hard to even make it here, Blank, and they are getting a little bit bullied. Similar sort of things have been happening to Alter Ego. Again, pressure applied on them. Fnatic from the side. Xavier, right? But at the moment, it's not looking too good. Holds on the spray from quite a while, but at least does find the shots over towards Lamborghini. Hills as well. It will cause problems. Isn't much breathing room, so you've got to fight for what you want. Pushing in now on Reject, looking to try and swoop in and steal the compound from underneath them. The nade will aggress first. Julo ready with the shotty as well, firing off buckshot from the DBS. Meanwhile, the building is burning. Lufa waits up close. Ooh, didn't even see that one, Blank. Swings around the corner, hits him, takes him off his legs. Hello. Reginocio turns for the back door as well. Read this fight well, Blank, but he's been peeked from the window, takes half HP off him. Just waiting now on the off angle. Tries to back nade whilst his teammates are fighting tooth and nail. Nade's going down. Who else wants a piece of this fight? What is this? There's 3 teams on the same compound. Regioso sends out the side into the vehicle to get himself some better angles. He's fighting for his life at this point in time. Spec moves in. Hoxie's half HP, and Regioso's out on the edge. Surely he spots Junie, but he doesn't inside the smoke. And now Duckshan have another battle to get through. Need to get more players back up on their feet, but they're falling so quickly. Just Hoxie and Junie left alive. Junie, a veteran of these high-scale tournaments, but Nasa move in at the best opportune time with a chicken dinner. It's all right. 15 limbs, 15 points, sorry, total is decent, but you know, pumping that as hard as you can here. They know they want more points. It's a very good initial nade that's sent out, but FaZe is on the back line. They're not looking to give this game up. Another amazing nade on the predict over towards G-Fan, and Redface is just sending these over and over again. Another one will take down GK first. Now just FSS left alive. It will be Redface to stand out for this one. One knock goes over towards Luxie with the 5 eliminations on board. Nade sent over the top, over towards FaZe, over on Udo Alliance, looking for that second place placement point steal. Evos, this is where you've just got to shut things down, close it out, don't let mistakes start to get out of hand. FaZe fighting tooth and nail though, bombarding down onto Misery, who's forced to hit the deck, so belly down to the ground, drops himself into the vehicle and tries to drive out of there, keep himself safe, susceptible to the shots though, but have some additional numbers in this battle to play with. Quick pop heal as well, nice peek up, beautiful damage done with the AR, switches to the DBS and wants to go full frontal. Blank, he's getting in their faces. What is going on? Already we see another knock come through with the DBS. Misery left alive, and he's taking damage here and there, able to clutch it out, but Udo Alliance, they're still in the wings here, Jackie.
They're low. Now would be the time to strike whilst the players are down. They're knocked. They're on their last legs. And that could have been a chicken dinner there for Udo Alliance, and Olio just needs a little bit more confidence for elimination points where he can. Does find a little bit of damage to start things off, but that'll be all it is as Redface finishes him off in a 21-point game. They did a great job of zoning people. It's already under the belt. There, after they took a couple of pot shots, Lufa looks over towards Tulika, will find the initial shot on the DBS, backing off just slightly, now looking for Zerich, who is holding his own as best as he can here. Oh, felt like that one was a little bit sloppy to get the final pick up there in the end, but they're still fighting for it, still looking to close things out. Frozen, fragmented from the rest of the squad, peeks out through the smoke. Ooh, look at the nade lineup on that as well. Couple seconds slower on the getaway, with Kishu just driving his way through straight away. We'll put a pin in that though, as there's a fight going on, and FaZe are fragging blank. They found their way through all of the gladiators. Inco moving over towards Nassar, over towards Spec at the moment. A little bit of a difficult position to be playing into the real support of his teammates, but a nice first initial spray down. Everyone's just trying to get the DBSs on the roof, but he doesn't care. The Vector will do the trick. Oh, he cuts his way through the first. Looking to re-aggress here as well. Bullets going down, detonations inside of the building. Xenox looking for the wide swing, close up through the window, spots another Inco man, but he's been punished from the side himself. Down on the floor now. Spec as well, eats the nade. Perfect bounce on that. Beautiful use of the angle as it ricochets off of the wall and takes the man down. Both of them playing medic, looking to get the reses in and reset on the fight. Doors wide open, head taken clean off as Squash, he goes out of this. Make any sense to me whatsoever, and with that, Nenabetse might be able to finish up a lot of these players coming through from Nassar. A total misplay in my opinion from what was an incredible opening fight there from Spec himself. Nenabetse is able to clutch this out. It's basically all down to the fact that you just don't use the utility that's on side. And the gap between DX is closing as well. Similar sort of story for Rejects, it seems, as they go for the swoop in and look to command respect here in the compound clash. Sarah, the bicep man, hits the first as Link goes down. Lufa again aggresses onto Misery, and one by one, Evos are becoming extinct as they are falling out of the server quite quickly. Luxy, though, wants to try and save face. Nades thrown in. Nice tag on at the first. Over the top from Regiosio. Bounces, actually just airburst a bit too early there for him. Looks to send another one over the top. Has a general idea of where he is. Great nade from Regiosio. Will finish it off, and Pazija Evos goes down. No real response to it though. Not actually turning onto this one. They just leave themselves laying there in the open. Can't really retaliate too easily, and they're just being farmed blank. The nades go in again for the easy cleanup. They've got no more smokes remaining either, so getting up will require them to get at least a knock. Lufa's not able to make it happen. Now just 2 players left alive versus Udu's 4, and they're going to send in on the approach. Is this going to be their downfall, or will this be where they win? Olio continues to send in some massive nades. He's been so important this entire game. The nade goes off, Reject will go out, and Udo Alliance, despite only getting the second that last game. 24 points on this one for Udo Alliance. The plane has taken off. FaZe that are starting to rebuild, reset, getting the res off so they can play together. Attention focus on the man outside, but it's the people in the building that you need to be worried about. Drop down connection. Lufa tried to go for a hell of a play, but he's been slain. Mela replying back with a shotty as well. Good for 2 blank. Could have made that uncomfortable. It could be a 1v3 no matter the situation, but luckily for Reject, they get out of there with 3 players left alive. Not an ideal scenario, but pretty good all things considered. NBE taking a lot of damage to the Galaxy. 2 teams that really do not want to go out early here. In the meantime, Reject looking to stamp their ticket through to the last chance stage. What a nade over the top there. Luckily, Sarah just about lives it. Knows he has to move away. Duello's down. 1 player remaining now for Reject. This is all crumbling. It's all falling to pieces quite quickly.
the dream for the Japanese side that they'd be able to revitalize themselves in the last 2 games of the day, be able to show up when it matters most, is quickly falling away from them, but maybe a window of opportunity. For Nick McGannis is to keep themselves in the running going forward. Freak finds the last player coming through from MBE and Akaze. Coops looks down towards Sarah, drops a Molotov, will reposition him, and Lamborghini would have spotted him if it wasn't for Lord, who makes it up towards 12 eliminations. Now don't forget DX's nades. They are so damn good, and this is why. They've got so many of them to use. Their comms for the timing on double nades is normally pretty picture perfect, and right now they are blowing Lord to pieces with it. You've got a nice knockoff onto Freak, looking to aggress the close on the damage done to Lord already. The shotgun's pulled out. Coops, he goes down for keeps, as that one's going to be DX snatching away the chicken dinner and securing themselves. Nemo Galaxy saw an opportunity, saw a weakness. 44 points. It looks very worrisome for this team going forwards. So for Alter Ego, they just got to cross their fingers now and hope to God that no one comes ahead of them tomorrow. Parajin drops out. It's Fistbite from top side, getting a good spray out, but not quite enough as DXavier handles them towards the end of it. And like you said, for the boys on Nigma Galaxy, this is just an entrance into the conversation with the big dogs towards the top side. Release Esports will finish off the Mad Bulls. Now just Nigma Galaxy, Freak and Coops to try and remain in this game, get themselves a chicken dinner. The Melee Scorpions are on the move, scuttling their way towards the final few players. They get the angle on Freak, should be an easy spray down. Slays on Uem, just as CEO later expires, the chicken dinner is secured. This chicken dinner, the 11 eliminations on top. There's a lot of chance that we will not see Alter Ego, because 11th position right now on the rankings. They could slip down really quickly heading into tomorrow. All the teams on the right-hand side in 13th to 24th place, minus Quest. Only 6 matches played,